Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss on the one of the most important topic in technical analysis, which is chart patterns. जैसा अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा तो हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था. जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने 3 पार्ट में 3 वीडियोस में डिवाइड किया था. सिमिलरली हम चार्ट पैटर्न्स को 4 वीडियोस में डिवाइड करेंगे. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पैटर्न शेयर करूंगी. सिमिलरली आने वाली 3 और वीडियोस में मैं आपके साथ कंप्लीटली जो भी चार्ट पैटर्न्स हैं वो सब शेयर करूंगी. तो आई थिंक अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियोस को देखा है तो काफ़ी सारी चीज़ें समझा होगा, बिकॉज समवेयर अराउंड हम लोग काफ़ी हद तक एक मिड वे तक पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे कि हमने देखा ट्रेंड्स क्या होता है, डॉ थ्योरी क्या है, ट्रेंड लाइंस कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो. We have understood the candlestick patterns and lot other things. So now today I'll be starting up. This is the first video into the chart patterns series. आज की वीडियो में मैं आपको दो पैटर्न्स बुलिश और दो पैटर्न्स बेयरिश रिवर्सल के बताने वाली हूँ. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो टुडे. Alright guys, so आज so technically these are the chart patterns जिसके बारे में हम बात करेंगे. Head and shoulder, inverted head and shoulder, double top, double bottom, flat, spin ends, symmetrical triangle, ascending, descending triangles, price channels, rounding top and bottom, cup and handle pattern, rectangle bullish and bearish patterns, and triple top and triple bottom patterns. So these are the some of the पैटर्न्स जो कि हम कंप्लीटली 4 सीरीज़ की जो वीडियोस हैं उसमें शेयर करेंगे. आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, we'll be starting up with the price channels first because that's the you can say good way to start with the chart patterns. So we'll start with price channels. We'll be talking about the bullish price channels and the bearish price channels. Also we'll be talking about the head and shoulder and inverted head and shoulder. So आज की वीडियो में हम ये 4 पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हेड एंड शोल्डर, पहले प्राइस चैनल्स के साथ स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप चैनल को देख सकते हो. सो बेसिकली इफ यू लुक एट हियर, ओके, नाउ दिस इज अ बेयरिश चैनल. ओके, अब ये बेयरिश चैनल बनेगा कैसे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम ट्राई करेंगे कि हम अपने टर्मिनल पे इसको फाइंड कर सकें. सो देखिए बेसिकली बेयरिश जैसा नाम से आपको यहाँ पे समझ आ रहा है. सो बेयरिश चैनल होगा एंड यूजुअली हमें इस तरह से दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना है, जिसमें हम मैक्सिमम टाइम ये देखेंगे कि प्राइस जो है उन दो लाइंस को टेस्ट करे. ओके, सो इफ यू लुक एट हियर, प्राइस इज फॉलिंग, देयर इज अ क्लियर डाउन ट्रेंड, बट इफ यू लुक एट हियर, एवरी टाइम द प्राइस is the highs are touching this particular higher, you can say a trend line, or you can say a line, a horizontal line, or the lows will be touching the lower point, right? So हमको एक ऐसा लेवल फाइंड करना है, एक ऐसा एरिया फाइंड करना है जहाँ पे कि अगर हम जो चैनल को ड्रॉ करेंगे उसमें मैक्सिमम टाइम हमारे हाईज और लोज जो हैं वो अपर और लोअर लाइन को टेस्ट करना चाहिए. ठीक है, सो जब तक ऐसा मूवमेंट बन रहा है, देयर इज नो पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बनने दीजिए. हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है या एंट्री हमें यहाँ पे क्या लेनी है. सो दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न. बेयरिश चैनल अगर आपका बनता है तो वहाँ से रिवर्सल होता है. रिवर्सल किस चीज़ का होता है, अपसाइड का. सो यू विल सी द मोमेंट यू विल सी दैट देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकआउट, दैट कुड हैपन एट द 4th टाइम, 3rd टाइम, इवन एट द 6th टाइम, 10th टाइम. वो डिपेंड करता है कि चैनल कितना लॉन्ग या कितना ड्यूरेशन का बन रहा है. और सिमिलरली आप ये चैनल्स को या चार्ट पैटर्न्स को शॉर्ट ड्यूरेशन में भी देख सकते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन में भी देख सकते हैं. तो यूजुअली हम किस तरह के ड्यूरेशन में देखेंगे इस वीडियो में, मे बी वील लुक एट द डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट. तो सिमिलरली आप उसको 15 मिनट्स, 5 मिनट्स या इंट्राडे, 1 आवर, 4 आवर्स चार्ट्स में भी देख सकते हैं एंड द कॉन्सेप्ट विल बी सेम. सो यहाँ पे द मोमेंट यू विल सी कि देयर इज अ ब्रेकआउट, दिस इज अ ब्रेकआउट. सो वॉट एवर द मोमेंट विल बी देयर, you can see that the movement will be on the upside. That's the first thing. So जो भी बेरिश चैनल बनेगा उसका रिवर्सल आएगा, और उसका रिवर्सल होगा कि अगर ब्रेकआउट, अगर अपर लाइन को वो ब्रेक करता है तो वहां से प्राइस
जो है वो अपसाइड जाएगा। अब वो कितना अपसाइड जाएगा, नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ द चार्ट पैटर्न्स। आप चार्ट पैटर्न्स में बहुत ही इजीली ये भी फाइंड कर सकते हैं कि उसका टारगेट प्राइस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस कहाँ लग सकता है। तो पहले हम बात करते हैं टारगेट प्राइस की। सो आप ये देख रहे हैं एरिया जहाँ पे, लेट मी हाईलाइट दिस मोर। सो ये जो जहाँ से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, राइट, सो इसका अपर और इसका लोअर लेवल्स, आई मीन ये जो दो लाइंस हैं जहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ है, आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, वॉट एवर इज द डिफरेंस, लाइक मे बी 100 पॉइंट्स और 50 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स, डिपेंड करता है। तो ये जो एरिया है या ये जो डिफरेंस आएगा प्राइस का, ब्रेकआउट के बाद आप एटलीस्ट इतना अपसाइड you can expect कि ये आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये 280 का एक इसका हायर लेवल है एंड अराउंड 160 इज द, गिव मी अ सेकेंड, yeah, so 280 is the higher price channel line, and around 150, no, 160, let's take 160. We are not getting a very clear picture, so I am taking 160. So 280 minus 160, so somewhere around 120. Okay, so 120 will be after the breakout. You just need to add 120 and that will be your target, right? So if I'll add 120 into 280, maybe the price will come around 300, 400, around 400, right? So let me see whether we will be getting this 200 price or not, because जब हमने ये screenshot लिया था, अच्छा तब तक नहीं हुआ था आई थिंक, क्योंकि प्राइस 325 यहाँ पे दिखा रहा है, विच मीन्स कि हमारा जो ये पोजीशन था वो ओपन पोजीशन था। तो जो भी आपके चैनल्स क्रिएट होंगे, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, अभी हम बेरिश की बात करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ से चैनल स्टार्ट हो रहा है और उसका जो अपर और लोअर लेवल है, लाइंस हैं, उसका एक डिफरेंस लीजिए, ब्रेकआउट के बाद उस उतने पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए एंड दैट विल बी योर टारगेट प्राइस। नाउ कमिंग टू द स्टॉप लॉस प्राइस, राइट, सो जो भी यहाँ पे डिफरेंस आया, जैसे हमारे पास डिफरेंस आया था 120 पॉइंट्स का, तो 120 पॉइंट्स का 50% विच इज़ लाइक 60 रुपीज़। तो इस लाइन के ब्रेकआउट का ये जो लाइन है, इससे 60 रुपीज़ से नीचे आप देखिए कोई एक लेवल आपको मिल रहा है क्या। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 60 रुपीज़, अगर मैं यहाँ से माइनस करती हूँ विच कम्स टू अराउंड 40, 100, 180, सो अराउंड 80 रुपीज़। ओके, नाउ यू कैन ओके, सो व्हाट यू नीड टू सी, इसका 50% के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सो मोस्ट प्रोबेबली इफ आई एम लुकिंग एट दिस चैनल, मुझे लगता है कि ये जो 100 है, 100 के नीचे, सो वही हमारा एक 90-80 रुपीज़ का एक लेवल आ जाएगा। तो यहाँ कहीं पे हम अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दिस कुड बी आवर स्टॉप लॉस लेवल एंड 400 कुड बी द will be our target price, so that we will see that what can happen. So this will be our target price. Okay, so this is how you can just take up this bearish channel. चलिए अब एक बार bullish channel भी समझ लेते हैं। So this is the example of bullish channel. अब bullish channel के लिए हमें क्या करना है, again we'll be looking at the two lines which should be parallel lines. तो यहाँ पे हमने दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना है, ऐसे पॉइंट्स को देख के जिसमें अगेन अपर लेवल जो है वो बार बार हाईज उसको टेस्ट करे और लोअर लेवल को लोज टेस्ट करे। क्योंकि यहाँ पे बुलिश चैनल है तो मेरा जो ट्रेंड होगा वो अपसाइड की तरफ होगा एंड ये जो रिवर्सल देगा वो ब्रेकआउट जो देगा वो डाउन साइड देगा। तो लोअर जो चैनल होगा या लोअर जो ट्रेंड लाइन होगा उसको ब्रेक करके फॉल देगा, राइट। सो सिमिलरली एक ऐसा पॉइंट को फाइंड कीजिए जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि एवरी टाइम जो हाइज हैं वो उस हायर लेवल को टेस्ट कर रहे हैं एंड फाइंड आउट अ लो पॉइंट जहाँ पे एवरी टाइम जो है वो लोज उसको टेस्ट कर रहा है, राइट। सो जस्ट ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस बेसिकली अ चैनल, और जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस जो है वो ब्रेक करता है, दैट विल बी योर शॉर्ट सेल पोजीशन, राइट। अगेन जो भी जहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ है वहाँ से आप उसका डिफरेंस लीजिए, दैट विल बी योर टारगेट प्राइस। आई विल शो इट टू यू हाउ यू कैन लुक एट दिस थिंग, आई टॉक यू टेल यू अबाउट दैट थिंग। सो टारगेट प्राइस आपका यहाँ पे हो जाएगा एंड देन अगेन 50% का जो भी डिफरेंस होगा उसके ऊपर
एक आपको कुछ ना कुछ लेवल मिल जाएगा, वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द बुलिश चैनल। चलिए अब बुलिश चैनल और बेयरिश चैनल दोनों हो गया है, टर्मिनल पर आ जाते हैं और विल ट्राई टू फाइंड आउट सम पैटर्न्स हियर। ओके, सो बुलिश चैनल मुझे याद है मैंने एक टाटा मोटर्स और टाटा स्टील दो में देखा है, तो विल बी लुकिंग एट टाटा मोटर्स फर्स्ट। तो टाटा मोटर्स का आई थिंक हम लोगों को वीकली चार्ट देखना रहेगा। गिव मी अ सेकेंड। सो व्हाट यू कैन सी, यू कैन जस्ट लुक एट द वीकली चार्ट। लेट मी जस्ट increase the number of years, and here so we are looking at the bearish chart. Okay, now this way. So guys, just look at here. This is another example. Let me just zoom it a bit. Okay guys, so this is the terminal and I think मैंने एक चैनल जो था टाटा मोटर्स में देखा था, तो मैं एक बार आई ट्राई टू फाइंड आउट. So what I'll do, I'll be changing the duration to weekly and increasing the duration little bit. So instead of 1 year, let me just look at the 5 years data. All right, so this is the Tata Motors chart, and yes, here we are getting a good bearish channel. So if you look at here, this area, let me mark this thing. So this area, this is your bearish channel. Okay, so I'll mark correctly. मैं आपको दो लाइंस कैसे ड्रॉ करना है वो भी बता देती हूँ. तो आप यहाँ पे एक चैनल को लीजिए और चैनल से जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, एक लेवल को मार्क कीजिए और इस तरीके से एक लोअर और एक दो लेवल्स को मार्क कीजिए. सो आई थिंक आई शुड, ओके, या ओके. So somewhere around like this, you can okay, just a second. Yes, so this is how you need to look at here. So this is the channel and this is the breakout. यहाँ पे हमारा एक breakout है और breakout के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस काफ़ी अपसाइड गया है. सो ये जो एक हमारा डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो आपका एक टारगेट हो जाएगा. हालांकि इस डिफरेंस से कहीं गुना ज़्यादा आपका टारगेट हो गया है पूरा. एंड इसका 50%, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर अराउंड हेयर दिस कुड बी द 50%, स्लाइटली बिलो देन द 50%, you can put your stop loss, right? So this is a perfect example because everything goes fine. breakout पर हमको वॉल्यूम्स भी हैं. अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखा होगा तो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ ज़्यादा सस्टेनेबल होता है. तो यहाँ पे यू आर गेटिंग एवरी थिंग विच इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द bearish channel. Now let me also give you one another example of Tata Steel. So this is the example of Tata Steel. यहाँ पे डेली चार्ट में रिसेंटली एक bearish channel बना है और चैनल को चलिए मार्क कर लेते हैं और ब्रेकआउट भी आ गया है बेसिकली. एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू. ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल एंड इफ आई जूम इट, तो आप देखेंगे कि ये एक ही अच्छा चैनल था और यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है. दिस इज़ द ब्रेकआउट एंड जस्ट लुक एट द एरिया. इन दोनों का जो डिफरेंस है विच इज़ लाइक वेरी स्मॉल. ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ वीकली चार्ट. वीकली चार्ट होता तो शायद हमें थोड़ा मूवमेंट मिलता, बट डेली चार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड बाय जस्ट लुकिंग एट दिस पिक्चर we can easily find out कि उतना टारगेट हमारा आ गया है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन लुक एट द बेरिश चैनल. अभी हमने टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील के बारे में डिस्कस किया है एंड लेट्स लुक एट सम अदर थिंग एज वेल. ओके, नाउ लेट मी जस्ट लुक एट वन मोर एग्जाम्पल and I think I have seen it in Ayushi Motors. So let me just put that chart. Ayushi Motors. Here it is. Okay,
So here also I think I have seen it in the daily chart. Okay, so let me just change the time frame. And okay, and mm-hmm, hmm. So this is also a good example. Okay, so this is a bullish channel which gives you a reversal to the downside. So maybe you can just look at this area, picked it up, and another level you can draw channel or upper trend line, you can draw like this, and then you can see the fall. So yes, after this good breakout, you can see okay, price is falling too much. तो ये एक आपका bearish channel का bullish channel का bearish reversal मिला है. So this is how you can look at the bullish and bearish channels. आपको काफ़ी ड्यूरेशन में मिल जाएगा, डेली, वीकली, इवन इफ यू लुक एट द स्मॉलर टाइम फ्रेम यू विल ऑल्सो गेट इट. सो ये मेरे को कुछ अभी हाल फिलहाल में याद था, so I have shared it with you. Let me just tell you the another chart pattern, and then we'll try to find out the some patterns, head and shoulder or inverted head and shoulder patterns in the live charts. So okay, so now let's come to the inverted, first of all head and shoulder, and then we'll talk about the inverted head and shoulder. All right, so for the head and shoulder, okay, so this is the image or the picture of the head and shoulder. अब यहाँ पे है क्या, it is just like the human body. We have the head on the higher side as compared to the shoulders, and the shoulders, two shoulders, left and right shoulders, are on the same length. Okay, so what happens, the price will rise, it will be a uptrend, and on one day, or you can say one movement will be something like this. You will see this kind of movement, the price go it will start going up and then came down a little bit. So it made a high, and then again it will start moving up. This time the high will be higher than the previous high. Again, that's the same concept of the uptrend, but the only thing is this time this low, so जो head का low होगा, that will be somewhere around near to the previous low, right? कुछ कुछ उसके आसपास का होगा, and then you will see another high which is the lower high, and this high will almost be at the same level as of the left shoulder. So the left and right shoulder का जो length होगा वो almost equal होगा, and now this is the time where we might able to see a breakout. Now this time you will see that the price will break this particular dotted line. So this dotted line is known as the neckline. So this is something neckline where the price is now moving downwards to to this neckline. So this is a very good example, and this is a very good pattern, I would say. And if you are getting this thing, I think these chart patterns will increase the probability of the profits. These are very you can say less risky things. So if you are able to start making profits, or if you are a new trader, or if you are a conservative trader, at least you should start with these things so that you won't be disappointed much. You will be getting good results mostly, right? So this is a little you can say these chart patterns are having less risk. So this is how you can look at here, and this is the neckline. The moment you will see the price goes down, gives you a good red candle as the breakout with the good volumes, that will be your short sell position. So this is also a reversal pattern. You will be getting this pattern in the uptrend, and will give you, or will indicate the downside. So now what could be the target price? So the target price, how you can calculate it? Okay, so first of all, just draw a line which is you call a neckline. So the neckline will be the lower level, and the high of this head, okay, so this high point and the neckline, whatever is the difference, that will be your target price towards the downside. So once you will see a breakout, you will see that the price might fall up to that level. So for example, if you are seeing that the head is at let's say 1000,
and you are seeing that the neckline is at let's say 700, right? So there is a difference between the head and the neckline is of 300. Now you just minus 300 from 700, that will come around 400. So that 400 will be your target. And where you can put the stop loss, just look at the immediate shoulder. On the high of the shoulder you can put the stop loss. So this is how you can look at the head and shoulder. So this is the head and shoulder, and opposite of this will be the inverted head and shoulder. So let me just explain you both and then we'll come to the chart, to the terminal. Now this is, you will see a downtrend, and so the price will make lower low, lower high, make one shoulder, another head, or the new low that will be lower than the previous low, and but this time the high will be almost at the same level, which is of the left shoulder. So the yes, this is a signal that okay, something's gonna happen. Maybe we might able to see a inverted head and shoulder, and then again we will see a right shoulder. So this right shoulder's high will be exactly, or almost at the same level of the left shoulder. Now this time once again the price will reach to this neckline. You will see a breakout, the price will go up from here. So in case of the head and shoulder, you will be taking a short position after the breakout, and in case of the inverted head and shoulder, after the breakout you will be taking a long position. Now again, just find out, just take out a difference between the neckline and the head. जो भी difference आता है, that will be your target price. You after the breakout आप add कर दीजिए उतने points को, आपका टारगेट पॉइंट आ जाएगा. एंड यहाँ पे जो इमीडिएट शोल्डर होगा, राइट शोल्डर होगा, उसके लो पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा. सो दिस इज हाउ you can look at the head and inverted head and shoulder, right? So okay, now let's quickly come to the terminal. Okay guys, so what I'll be doing, I'll be just telling you the example of head and shoulder and inverted head and shoulder. So I can see both inverted head and shoulder and head and shoulder in Reliance chart. So this is the daily chart, and let us try to look at the head and shoulder first. So this is the head and shoulder. Let me just mark it for you so that it will be easier for you to identify. So this is the head and shoulder. So this is the shoulder, another shoulder, and this is the head. Now how to draw the neckline, let me just tell you. So for that, just pick up a line here, and this is the horizontal line. So this is your neckline. So around this way you can just draw the trend line. So if I'll see the the close of this, I just look at the neckline price. So neckline price is very near to 2518, right? So 2518, and the high of the head, which is 2751. So if I'll just calculate the your difference, so 2751 minus 2158, around no, I think I have done something wrong. I forgot the price, I guess. 2518. Okay, got it. So 2751, 2518, right? So 233. So this is the difference which is coming from the high of the head and the necklines, right? So after the neckline, which means my neckline price is around 2518, I just need to minus deduct this 233. So 233 minus 2518, my target price is coming around 2285. Now if you look at here, 2285, I think somewhere around close 2285. Okay, so the low that the price is okay, so just look at the low, which is 2180. So यहाँ पे हमारा जो target price है, just look at this fall, target price है वो यहाँ पे हमारा fulfill हो गया है, right? And where you can put the stop loss, at the high of this particular shoulder. तो आप देखेंगे कि stop loss के पास वो आया ही नहीं है. This is the reason I am telling you again and again कि जितने भी chart patterns हैं, वो chart patterns आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक हाई प्रोबेबिलिटी के साथ आपको
ट्रेड अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं. सो नाउ सिंस आई एम लुकिंग एट द डेली चार्ट, सो दिस इज यू कैन लुक एट द स्विंग चार्ट, स्विंग ट्रेडिंग. एंड अगर आप इंट्राडे देखते हैं तो आप अपना इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी भी जनरेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, आपको पैटर्न फाइंड करना है. इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जब हम कैंडल स्टिक्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम एक या मैक्स टू मैक्स 3 कैंडल्स के बारे में बात कर रहे थे. चार्ट पैटर्न्स को बनने के लिए इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम कैंडल्स, तो उसको बनने दीजिए, ब्रेकआउट आ जाए तभी एंट्री कीजिए. सो ये हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर का. एंड सिमिलरली आई थिंक आई कैन सी द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इन दिस चार्ट ओनली. बट उसके लिए हमको थोड़ा सा एक आई थिंक कोविड के टाइम का 2020 का डेटा देखना पड़ेगा. एंड आई थिंक वी वुड बी एबल टू गेट इट. वो काफ़ी क्लियर है, तो इनिशियली अगर आपको समझने के पर्पज से देखना है तो वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वो काफ़ी आपको क्लैरिटी देगा. ओके, सो दिस इज योर inverted head and shoulder, right? So this is the shoulder, this is the head, and this is the another shoulder, right? So let me just draw the neckline. So neckline can be drawn something like this, something like this, right? Okay, so here what we need to see, we just need to look at, okay, give me a second, I think let me remove this thing. Okay, now this is the neckline price, which is okay, this one. So let me just take the close, which is 1588, right? So I'm just rounding it off, so I'm taking 1590. And what is the low? Low point is 867. So 867 and your 1590, we need to deduct 1590 minus 867, so the difference is coming around 723. Now we just need to add 723 into 1590, which is coming around 2313, right? Somewhere around 2300. Now let us see, the 23 level, 2300 level, I would say. Okay, so it will take time, but yes, you can see that here, around here you can see the prices testing this 2300 level. So यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस बीच में कंसोलिडेट हुआ है, जिसकी वजह से टाइम लगा है. बट आपको मैं एक चीज़ वापस से बताना चाहती हूँ कि अगर डिफरेंस ज़्यादा है नेकलाइन में और हेड में, तो आपको उतना टाइम लगेगा उसको अचीव करने में, राइट? सो आई थिंक आई टेल यू वन मोर एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. वो थोड़ा फास्ट था, तो मैं यहाँ पे एक टाटा पावर लगा देती हूँ, एंड आई थिंक आई वुड बी एबल टू डू इट फ्रॉम हियर. So okay, from here, okay, Tata Power, okay, Tata Power, okay, yes, okay, I can't see Tata Power here. I am also new to this platform, so I am learning. So give me a second, let me just find out, or else what I'll do, I'll just, maybe I can open another watch list and put it there. No, it's not here. I don't know what's happening. Okay, I don't know. No, fine. So let me just try to open another market watch here, and hopefully I would be able to put another stock here. Tata Power. Oh, I think it's not showing, that's the reason. Okay, Tata Power, why it's not showing? Oh, like this, got it. Okay, so this is the Tata Power. So this is that example where I also took the trade. I think it's been around few months now, few years I would say, and but I'm still holding up that stock. Okay, so that was a time
I think that was a time of last year something. Just a second. So I entered at 57, and that was a weekly chart. Hmm. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रेकआउट हुआ था. सो आई थिंक ये जो प्राइस था दैट वाज 71, और हमारा जो लो प्राइस था दैट वाज 27. तो आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि इसके बाद ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम आया था. सो दिस इज़ हाउ यू कैन लुक एट to this thing. And I think inverted head and shoulder and head and shoulder price channels अगर आपको मिलता है, you can easily take up a position. In the next session or in the next video, we'll be trying to cover few more chart patterns जहाँ पे हम again we'll be looking at the theoretically first, and then we'll be finding it out over a chart. And hopefully it will help you in your trades, it will help you in increasing your knowledge. So I think this is all from my side today. Thank you so much for watching us.